welcome to another episode of Players Den. And today we have with us squash player Ahsan Ayaz. So we'll talk about his life and his stories from the court and something else as well. So over to you, Ahsan. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच नूर आपने मुझे जो है इनवाइट किया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट आई एम परफेक्टली फाइन आप कैसी हैं Well, I'm great as well. I mean, everything's super under the circumstances. मतलब जितना हो सकता है. And this is life, so everything's well. Acha, so we'll just take a dive into it. So the first question that I have for you is, how did it all start for you? I mean, how did you find your way to the squash courts, and how did you pick up the racket, and how did you become the Ehsan that you are today? well that's an interesting question Noor I still remember when I was in class 5 or for the first time मैं अपने भाई के साथ गया था because my brother he used to play squash और उनका एक मैच हो रहा था बिलीव मी मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था स्क्वॉश में आई नेवर न्यू कि मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बनूंगा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई went with him and उसका मैच हो रहा था और आई सॉ दैट मैच और मेरा भाई जो है मतलब बहुत बुरी तरह से वो मैच हार गया था and his opponent was like he was so like you know वो कहते हैं कि वो काफी प्राउड फील कर रहा था and that time मुझे फील हुआ कि यार भाई का बदला ले रहा है and I came back and मैंने बाबा को बोला बाबा why not if I start playing squash बाबा was like कि मैंने तो तुम्हें काफी टाइम से बोला है you can start this sports any time लेकिन मुझे शौक था ज्यादातर जिम्नास्टिक का और then I end up with squash and that was the day when I decided कि Ahsan either you have to do it or just stop. So that's interesting that you mentioned gymnastics. हमारे इधर पाकिस्तान में यूजुअली वी डोंट हैव ना लड़कियां होती हैं ना लड़के होते हैं जिम्नास्ट बहुत ही शायद रेयर होते होंगे आई हैव नेवर एटलीस्ट हर्ड ऑफ जिम्नास्टिक्स इन पाकिस्तान सो हाउ डिड यू लाइक वांट टू बी अ जिमनास्ट I didn't know मैं जब छोटा सा था like I mean when I was like as I mentioned कि when I was in grade 5 तो स्कूल में या घर के बाहर मैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टंट्स करता था like मूवीज में जो होती थी और कभी हाथों पे चलना एग्जैक्टली तो कभी हाथों पे चलना कभी लाइक कभी जो है हाथों के साथ दीवार पे खड़े होना लाइक आई मीन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टंट यू नो और डेंजरस काइंड ऑफ स्टंट तो डर भी लगता था लेकिन दैट टाइम जो है मतलब छोटा था और आई वाज लाइक रियली इनटू दो स्टफ मैं जब भी स्कूल से आता था तो मेरी स्पोर्ट्स हमेशा यही चीज होती थी मैंने बाहर जाना या घर के अंदर ही जो है मतलब कभी हाथों पे खड़े होना लाइक एक हाथ से जो है कलाबाजी मारना सो आई वाज रियली इनटू दैट स्टफ बट देन आई एंड अप विद स्क्वॉश यू नो एंड पहली बार खेला एंड आई वाज लाइक इट्स अ लॉट ऑफ फन इट्स सो मच फन and then I started playing squash when I was like 9 years old, I guess. Yeah, I was 9 years old. so that was a good start मतलब at night so I what I got out of the story as well is something that it's something of a revenge story as well कि मैं अपने भाई को बता दूंगा that's how good movies start actually so एग्जैक्टली मैंने वो मुझे स्टिल याद है लाइक आई मीन जब मैं कोर्ट में गया तो मेरा भाई जो है जब वो हारा अपना मैच and I felt so bad for him and he was literally crying you know and then I was like बाबा मुझे भी ये गेम स्टार्ट करनी है और मुझे उस ओपोनेंट को जीतना है और यू वोंट बिलीव इट मैं उस ओपोनेंट के साथ मेरे भाई का जो ओपोनेंट था मैं उसके साथ फिर एक लाइव मैच खेला था आफ्टर 5 years और मेरा उसके साथ लाइव मैच हुआ था कराची में एशियन चैंपियनशिप में well it was an open event it was considered to be an Asian championship but it was like different countries से players आए थे और उसमें मेरा सेमीफाइनल मैच उसी ओपोनेंट के साथ हुआ था and that was the day when I beat him and believe me मुझे वो फर्स्ट डे याद आया था जब when I step on the court के मैंने इसको जीतना है और it took me like 5 years कि मैं उस ओपोनेंट को जीता था but you did it anyway right happy ending I did it yeah yeah so so in Pakistan picking up sport as a career
there, I mean, I'm sure that as an athlete, काफी सारे challenges आपने face किए होंगे, लेकिन specifically talking about Pakistan and having sport as a career, what are some of the things that you had to face? Family, friends, ka pressure, probably extended family, anything else that you think is noteworthy? वेल अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेना लाइक आई मीन सीरियसली इट्स अ वेरी टफ डिसीजन लाइक आई मीन अगर देखा जाए राइट नाउ आई एम इन द यूएस राइट सो अगर मैं कंपेयर करूं यूएस को पाकिस्तान के साथ या फिर किसी और डेवलप्ड कंट्री को पाकिस्तान के साथ जहाँ पे अगर एक स्पोर्ट स्टार्ट होती है तो एक बच्चे को पता होता है कि लाइक आई मीन he's gonna get sponsors, he's gonna have like I mean everything अगर वो कोई भी स्पोर्ट्स में कदम रखता है right but in Pakistan it's a tough decision you know like जब तक आप कुछ नहीं बन पाते तो you have to do everything by your own you know and with the studies I mean there was like a huge pressure होता है friends का family का surrounding का like it's a huge pressure but then there is a person inside you जो के like I mean वो एक प्रोफेशनल एथलीट लाइक आई मीन व्हाट आई फील इज लाइक अ पर्सन आई फील कि वो इतना पैशनेट होता है कि ही डजंट एक टाइम आता कि ही डजंट केयर अबाउट दैट और he keep on working for what he wants to achieve you know and so this is what it is. So, a person or maybe persons, people actually, who inspired you and supported you the most throughout your career? Well, throughout my career, seriously, मैं जो बताऊंगा like my baba, he was the first person कि उन्होंने like I mean day in and day out, he supported me a lot. और I still remember like I mean when I was studying, meanwhile जो है मेरे events होते थे like back in my city. तो I still remember कि मेरे जब एग्जाम्स होते थे तो मेरे बाबा मेरे साथ जो है लाइक रातों को उठते थे और मैं 5-6 बजे तक लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 6 AM 5 AM मैं स्टडी करता था आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज और मेरे बाबा जो है लाइक उनको सख्त नींद आई होती थी बट स्टिल लाइक आई मीन ही वाज बिसाइड मी ही वाज वाचिंग मूवीज और मैं स्टडी करता था और देन आई स्टिल रिमेंबर कि मैं लाइक 3-4 आवर्स की स्लीप करता था वो ऑफिस चले जाते थे और वो आके दोपहर को सोते थे लाइक जस्ट फॉर 2-3 आवर्स एंड आई थिंक इसका जो ज़्यादातर मैं क्रेडिट दूंगा मेरे बाबा जो है मैं अपने बाबा को जो है थ्रू आउट माई करियर काफ़ी क्रेडिट दूंगा एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आई मीन मैं वट एवर आई एम टूडे इज लाइक आई मीन ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक आई एम बाय माई ओन इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क तो मैं ऑफ कोर्स अपना जो है मतलब ये क्रेडिट अपने कोचेस को दूंगा अपने उन टीचर्स को दूंगा तो ऑफ कोर्स it's a teamwork. It's a teamwork. So, like, your dad was a superhero that way. Of Uh, course, yes. yeah. Acha, that makes me think of another thing. You said you started early. You were 9 years old when you started playing squash. To managing school jana and khelna jaake, because if you're going to be an athlete, so you need to give that time as well. It can't be like a weekend job. So how difficult was it for you to go to school every day and then go to practice every day? And I mean, what was your routine back? Well, नूर इस सेंस में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि लाइक आई मीन आई वाज अ बिट लकी क्योंकि मेरा जो स्कूल माय स्कॉश कोर्ट्स और मेरा घर इट्स लाइक 2 मिनट्स बाय वॉक तो मेरे घर से मेरा स्कूल जो है इट्स लाइक 2 मिनट्स बाय वॉक और मेरे स्कूल से जो स्कॉश कोर्ट्स हैं इट्स 2 मिनट्स बाय वॉक तो ये होता था इवन दो कि मेरे टीचर्स को भी पता था लाइक आई मीन उस वक्त जब आई मीन व्हेन आई वाज अ किड तो उनको पता था कि व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग इट ऑन नेशनल लेवल तो उनको पता लगा कि ही इज एन एथलीट तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा आई फेल्ट कि उन्होंने जो है मुझे काफी सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे एक फ्री हैंड दिया था तो बाबा what I did like I mean कि जब मेरे मैचेस होते थे या फिर मेरे ट्रेनिंग सेशंस काफी टफ होते थे तो इन दोज डेज अगर मैं कोई सेशंस जो मेरे स्कूल की क्लासेस थी अगर वो मैं मिस भी करता था तो मेरे टीचर्स जो मेरे घर आते थे वो मुझे पढ़ा देते थे
तो एंड इवन दो माय प्रिंसिपल जो थे वो भी ही वाज क्वाइट सपोर्टिव और तो दिस इज हाउ आई केप्ट ऑन गोइंग लेकिन बहुत बहुत टफ टाइम मैंने फेस किया लाइक आई मीन बिकॉज अगर देखा जाए मेरे कुछ टीचर्स मुझे बोलते थे कि ऐसन तुम दो कश्तियों में सवार हो लाइक स्कॉश भी है और स्टडी भी है तो तुम दरमियान में गिर जाओगे I used to listen to these words like every single day from one of my teacher मेरे इंग्लिश टीचर थे और वो मुझे ये बात करते थे कि ऐसन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि I was the second first topper of my class too तो मैं हमेशा अपनी क्लास को भी टॉप करता था तो ही वाज लाइक कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हो और तो वो हमेशा से मुझे एक ही बात करते थे बट देन आई वाज कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ इट्स पॉसिबल Now, if you want to follow your dream, then you have to make it possible in many ways. exactly you have to make it possible yeah. The question was, if you were ever going to pick a sport, how come you've picked up squash? So we've already covered that with the revenge story, which I really liked. I think Okay, that's yeah, exactly. और एक और बात भी मैं बताऊंगा कि आई मीन व्हाई आई हैव सेलेक्टेड स्कॉश यू नो व्हाट कि जैसे मैंने बताया कि लाइक आई मीन डेली स्कूल जाना और फिर आप स्कॉश कोर्ट्स को डेली आप रास्ते में देखते हो जो कि आपके घर के बिल्कुल साथ ही है और फिर वो ऐसी स्पोर्ट जहाँ पे पाकिस्तान ने लाइक मोर देन 50 years जो है जिसमें पाकिस्तान ने रोल किया वर्ल्ड पर तो ऑफ कोर्स देन देयर इज समथिंग इन योर माइंड कि यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ आई रियली वांट टू डू समथिंग सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैंने जो है स्कॉश को चूज किया okay. So let's talk about your move to the US. Is this something that you've done for your athletic career? Okay, better coaching, better facilities, more opportunities to play, or is this more of a long-term decision? Ki, "Acha, I'll just take it out over here and see how this." Well, Noor, as you know that I mean I'm a professional athlete or I travel around the world. तो I mean मैंने काफी जगहों पे देखा मैंने like I mean बहुत ज़्यादा traveling की. There were couple of reasons कि मैंने ये थोड़ा सा decide किया कि why not if I mean visit US और मैं US में जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करूँ और क्योंकि आई मीन आई विजिटेड बार्सिलोना मैंने बार्सिलोना भी किया वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग की आई हैव बीन टू मैक्सिको मैंने मैक्सिको में ट्रेनिंग की लाइक आई मीन आई हैव बीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और why I have I mean मैं why I have selected why I have chosen US क्योंकि यूएस में जो है अगर देखा जाए अभी जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं लाइक फ्रॉम इजिप्ट फ्रॉम इंग्लैंड फ्रॉम ऑफ कोर्स फ्रॉम द यूएस from Mexico, from Germany, like I mean, सारी I mean there are a bunch of players जिन्होंने अपनी base यहाँ पे US में बना ली है, and then there are like a lot of international events. So I mean, that's one of the option कि like I really want to stay here, or and then the second option is like my coaches they live here. One is Fahim Khan Salim. He just moved here, and then there's another one, Kama Khan. He lives in the US और वो भी यहाँ पे कोचिंग करवाते हैं और इस आई मीन मेरे कोचेस आई मीन ये दोनों यहाँ पे है तो इनके पास मैं आके ट्रेनिंग करता हूँ एंड देन देयर आर बैक इन माय कंट्री मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ अगर मैं बार्सिलोना जाता हूँ वहाँ पे आई हैव कोचेस अगर मैं मैक्सिको जाता हूँ आई हैव अ कोच देयर तो आई मीन दैट्स व्हाई आई हैव चूजन द यूएस क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स हैं जिनके साथ खेलने का मौका मिलता है और इवेंट्स यहाँ पे ज्यादा हैं so that's why Hmm. so That's a why I usually yes surprised me. go forth and back yeah So that at least you get opportunity to play with great competitors that you stay in practice in good shape. Acha. exactly yeah Okay, so I have a related. This is a related question. So we as in Pakistan, the Pakistani people, we ruled the world of squash for like half a century, roughly. exactly But so now, if you compare our situation with that, अब probably हम किसी भी sport में कहीं पर भी नहीं शायद rank कर. I don't think we do actually. So, I mean, squash glory at one side and not being able to find great coaches or maybe even great facilities to play in. How does that make you feel? कि इतने ऐसा चैंपियन रहने के बावजूद हम कल्टिवेट नहीं कर पाए एक कल्चर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर
for support? वेल नूर, अगर देखा जाए तो आई वुड से कि देयर आर कपल ऑफ रीजंस कि हम सिर्फ स्क्वॉश में नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी जो है, मतलब हम अभी वर्ल्ड में जो है पीछे जा रहे हैं। देखिए, द फर्स्ट थिंग इज लाइक, आई मीन, जो कि सबको नजर आ रहा है, दैट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास जो है वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड जो है, मतलब हर स्पोर्ट्स के लिए अगर देखा जाए, लाइक स्कॉश का अगर देखा जाए तो वहाँ पे, लाइक, आई मीन, इतने ज़्यादा कोर्ट्स नहीं हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे, वो चीज़ जो है वो एक लैक कर रही है। एंड देन सबसे जो बड़ा रीज़न है, आई वुड से कि मीडिया की कवरेज भी जो है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो ज़्यादातर कवरेज अगर देखी जाए तो, आई मीन, सिर्फ क्रिकेट के अलावा और किसी और स्पोर्ट्स को नहीं दी जाती। Like, जी I mean, I became world junior champion after 8 years, and still, like, I mean, मुझे पाकिस्तान में इतना नहीं जाना जाता। देयर आर अदर प्लेयर्स जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब हमारे स्कॉश के जो है काफी अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, उनको कोई भी नहीं जानता पाकिस्तान में। बट इफ यू आई मीन, अगर किसी भी क्रिकेटर का नाम आता है, लाइक हसन अली, यूनुस खान, तो हर कोई, एवरीवन नोज देम। तो इसका मैं एक, दिस इज वन ऑफ द रीजन। और जो थर्ड रीजन है, अगर देखा जाए कोचिंग के लिहाज से, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे हम ये चीज़ भी थोड़ी सी लैग करें, क्योंकि हम वर्ल्ड से पेस में भी थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। व्हाट आई हैव फेल्ट कि मैंने इतनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखा, लाइक, आई मीन, दुनिया अभी काफ़ी तेज़ी से जो है आगे जा रही है, लेकिन हम स्टिल वही पुराने तरीकों को लेके उसी पे जो है, लाइक, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो आई मीन, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, और अगर आपने जो है वर्ल्ड के साथ जो है कम्पीट करना है, तो आई थिंक यू हैव टू, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स कि आपको जो है उस चीज़ पे वर्कआउट करना है। और अगर देखा जाए एक और लिहाज से, तो व्हाट आई हैव फेल्ट कि अभी वर्ल्ड में जहाँ भी जितने भी प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, वो सारे एजुकेटेड हैं, राइट। बट बैक इन आवर कंट्री, मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि, लाइक, आई मीन, हमारे इंटरनेशनल एथलीट जो है फॉरेन कंट्री में आते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो बात नहीं कर पाते। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन के, मतलब ये सारी चीजें जो है ये मैटर करती हैं। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, बिलीव मी, आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। टू बी अ प्रोफेशनल एथलीट, अपने आप को मैनेज करना, यू रियली नीड टू बी एजुकेटेड हर लिहाज से। इवन दो आपके डाइट के लिहाज से, हमारे एथलीट्स को ये नहीं पता कि, मतलब, आई मीन, एक प्लेयर की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, और तो ऑफ कोर्स आप वर्ल्ड में जो है, ऑफ कोर्स आप पीछे रह जाते हैं, एंड दैट्स दीज आर द रीजंस कि हम पीछे हैं। अच्छा, so moving on, something about you. If you lose a match, आप हार गए हैं, तो अगर अवेलेबल हो फुटेज उस मैच का, डू यू एवर वॉच इट टू फिगर आउट कि मेरी मैंने गलतियां कहाँ कहाँ पे की हैं? वेल नूर, अगर देखा जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि अगर अपना, जिस मैच में आप हारते हो और अगर उसकी फुटेज पड़ी हो, एंड यू वॉच दैट मैच, पर आई स्टिल ट्राई टू वॉच माई सेल्फ। मैं कोशिश करता हूँ, लाइक, आई मीन, कि जितना हो सके मैं अपने आप को वॉच करता हूँ, अपनी वीडियोस देखता हूँ। कोई चीज़ अगर मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों से डिस्कस करूँ। आई मीन, आई डोंट फील शाय कि मैं अगर किसी जूनियर प्लेयर से वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। आई डोंट फील शाय कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे से वो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ जो इस फील्ड का नहीं है। मैं बाबा से काफ़ी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, मैं कोचेस के साथ हमेशा बैठता हूँ, मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट करता हूँ। समटाइम्स जो है उनको वो चीज़ लाइक बुरी लगती है, वो आर्ग्यूमेंट। लेकिन मेरे असल में इस आर्ग्यूमेंट का मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं जो लेग कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को जो है कवर अप कर लूँ। तो और जहाँ तक फुटेज की बात है, तो ऑफ कोर्स आई ट्राई टू वॉच देम। मुश्किल होता है, लेकिन मैं करता हूँ। No, यस। that's very honest of you. That's very honest या। of you to admit it. But no, यस। I think in our case, मतलब a person's ego would never allow you to say कि बड़ा मुश्किल काम है. No, you will do it. You will do it आराम से. अच्छा, so something, अच्छा, happy memories now. So कुछ बहुत ही memorable, happy वाला memorable moment on the squash court.
या कोई ऐसा मैच जो शायद सारी जिंदगी आपको याद रह जाए फॉर वट एवर रीजन, चाहे आप जीत गए थे या हार गए थे, या मे बी समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड हैपेंड, लाइक अभी जैसे मेरा फोन गिर गया अचानक से. Okay. सो एनीथिंग. Uh, well, memorable moments जो है like I mean जो one of the memorable moment है for the first time जो है मैं अपना international senior event जब जीता था. I never thought कि मतलब मैं उस event के लिए जा रहा था and I never thought कि like it's gonna be possible. Like, I mean, मैंने उसके लिए मेहनत काफी ज्यादा की थी and I was like, of course I'm gonna क्योंकि मेरे कोच ने मुझे हमेशा से ये एक बात सिखाई थी कि ऐसन doesn't matter if you win or if you lose. The only thing जो matter करती है, I mean, you have to give your best. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मलेशिया गया था और वो मेरा इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें टॉप 100 के प्लेयर्स compete कर रहे थे एंड आई वाज लाइक 200 समथिंग इन द वर्ल्ड और मुझसे काफ़ी अच्छे रैंक के प्लेयर्स जो उसमें compete कर रहे थे और क्वालिफिकेशन से लेके लाइक आई मीन मैंने क्वालिफिकेशन अपने 2 राउंड जीते. मैं ड्रॉ में गया, ड्रॉ में जो है मेरा सेकंड सीट से मैच आया एंड ही वाज अ टॉप 100 प्लेयर और मैं उसको जीत गया लाइक 3 स्टेट एंड आई वाज शॉक्ड कि यार आज मैं इसको जीत गया हूँ. एंड देन दैट वाज द टाइम कि आई वाज लाइक यार अभी एक एक मैच पे फोकस करना है एंड टिल द फाइनल जिस दिन मैं फाइनल जीता आई फेल ऑन द फ्लोर एंड आई वाज लाइक कि कभी सोचा मैंने नहीं था कि मैं लाइक एक इंटरनेशनल इवेंट जो है मतलब इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के दरमियान ये जीतूंगा. तो आई स्टिल रिमेंबर उस वक्त मैं आई वाज लाइक 18 ईयर्स ओल्ड और वो पहला इवेंट जो है मैं अपना इंटरनेशनल दैट वाज नॉट लाइक माय फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट जो मैं जीता था लेकिन 18 इयर्स में अगर मैं अपना इंटरनेशनल सीनियर इवेंट जीत रहा हूँ जिसमें टॉप 100 के प्लेयर्स खेल रहे हैं तो आई थिंक that was like I mean that was a big achievement. That was a big achievement. And the second achievement was कि जब हम वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीते थे और that was one of the big achievement for us. I think that makes me think of another question to ask you. Do you think कि on a personal level confidence कि हम अपने rival को या opponent को हरा सकते हैं, does that really count when you're playing? Do you like people say कि sport यहाँ से खेली जाती है ना कि like with your arms and stuff? Is that true to some degree? No, that's a very good question. और yes, it matters a lot क्योंकि अभी हम जब भी कोर्ट में like when I step on the court तो सबसे पहली चीज जो होती है I mean वो प्लेयर जो नोटिस करता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करता है and that's a mental fight. आप वो फाइट पहले पहले स्क्वॉश कोर्ट में होती यही चीज है कि आप अपने प्लेयर को मेंटली बीट करते हो और जहां पे लाइक आई मीन वो एक ऐसी फाइट हो रही होती है वो थॉट्स के दरमियान ऐसी फाइट हो रही होती है ड्यूरिंग द पॉइंट्स कि जहां पे मुझे पता लग जाता है कि यस दैट्स द पॉइंट कि मैं अब जीत रहा हूँ और वो हार मानना शुरू हो गया है. So yes, it's always it's more a mental game than I mean being physical or what I feel is like yes, it's more mental. It's more mental. It's more Okay. mental. Yes. Yeah. I think I should ask that question of more athletes ताकि हम एक research इसके ऊपर पूरी कर सकें. अच्छा, so अच्छा, let's talk about Ehsan. Who is Ehsan as a person? Let's hear about your backstory. Where did you come from? अच्छा, and let's just say कि if you were not who you are, तो आप Ehsan को other than a squash player किस तरह define करें? Okay, well, Ahsan is an ordinary person. Ahsan जो है, like, I mean, if I was not a squash player, to be very honest, मुझे acting का काफी शौक था, and I was like, I'm gonna be an actor. लेकिन even though some of my friends, like, I mean, I mean, वो मुझसे बात करते हैं और मुझे कहते हैं, like, you have to go for it, man, and you know, like, I mean, स्टडीज स्कॉश और फिर एक्टिंग की तरफ और स्टडीज स्कॉश को फिर प्रोफेशनल लेवल पे एंड देन एक्टिंग की तरफ जाना दैट्स अ टफ थिंग एंड या सो दिस इज एसन दिस इज व्हाट आई मीन आई थॉट कि मैं होता इफ आई वाज नॉट अ स्कॉश प्लेयर एंड दैट्स ऑल. Okay, ठीक है. अच्छा, what do your friends think? मतलब आपके assumption में what do your friends think about you? कि एहसन किस नेचर का इंसान?
वेल मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं लाइक आई मीन आई हैव जितने भी फ्रेंड्स हैं आई मीन दे ऑलवेज इन्होंने हमेशा मेरे बारे में लाइक आई मीन गुड सोचा है। हमेशा मैं उनके कमेंट्स उनके कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं हमेशा मुझे यही चीज़ आती है कि एहसन हैज़ अ गुड नेचर, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे भाई के भी फ्रेंड हैं। तो क्योंकि माय ब्रदर ही इज़ अ बिट एग्रेसिव, तो मुझे हमेशा हर वक़्त उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो मैं हमेशा अच्छी लाइन में रहता हूँ। तो हमेशा अच्छे अल्फाज में याद हुआ हूँ मैं। ओके ओके। यस। अच्छा, तो कभी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया कि जिसमें आपने सोचा हो कि आई शुड क्विट नाउ एंड दिस इज इट, बस अब और नहीं हो सकता? नूर, मेरे लाइफ में ऑफ कोर्स इस तरह के मोमेंट्स जो हैं आए हैं। वन ऑफ द मोमेंट कि जब पहली बार लाइक आई मीन लाइफ में काफ़ी इंजरीज हुई हैं नूर, लेकिन मैं अभी रिसेंटली लाइक आई मीन एन ईयर बैक आई वाज इन फिनलैंड एंड आई वाज प्लेइंग माय फाइनल मैच, एंड ड्यूरिंग माय फाइनल मैच मैं थोड़ा सा फ्लोर पे स्लिप हुआ एंड आई हैव गॉट पार्शियल एसीएल टेयर। मुझे पता नहीं था। मैंने वो मैच खेला, उसके बाद मैं स्वीडन गया और उसी नी पे डेली वार्म अप होना, वो उतना मसल पेन होता था कि आई फेल्ट कि यार ये दर्द जो है तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन मैं हर रोज़ उसको वार्म अप करके उसकी आइसिंग करवा के उस पे मैंने 2 मैचेस खेल लिए। मैं दोनों स्वीडन में दोनों फाइनल जीत गया, मैं पाकिस्तान आया एंड वो दर्द ऐसी तकलीफ इतनी बढ़ रही थी कि मैं लिटरली नमाज नहीं पढ़ पा रहा था एंड आई वेंट टू सी अ डॉक्टर और मैंने अपनी एमआरआई करवाई एंड आई हैव गॉट अ पार्शियल एसीएल टेयर। तो उस वक़्त मेरी आँखों से थोड़ा-सा वो कहते हैं कि व्हेन माय डॉक्टर सेड कि मतलब यू हैव गॉट अ पार्शियल एसीएल टेयर, तो मेरी आँखों में आँसू आ गए एंड आई वाज़ लाइक कि मेरी स्पोर्ट्स जो है वो ख़त्म हो गई है। मैं लिटरली बाबा के साथ मैंने बाबा को हग किया और मैंने बाबा को बोला, बाबा इट्स ओवर नाउ। बाबा कहते हैं बेटा ये लाइक आई नो इट्स अ मेजर इंजरी, लाइक बड़ी इंजरी है, आपको 1 साल 1.5 साल जो है इसमें आपको स्क्वॉश क्विट करनी पड़ती है, बट दैट्स नॉट समथिंग कि ये फिक्स नहीं हो सकती। हम्म। And believe me, that was the time कि then I was like कि I have to quit, and then mentally अपने आप को ये 1 साल जो है मतलब मैंने जितना पुश किया I have मैं नहीं बता सकता कि मैंने अपनी 21 years में अपने आप को इतना पुश किया हो। जब आप कोर्ट में खेलने के लिए जाते हैं एंड so there's a competitor who's probably number one or number two or number five, तो सबसे बड़ा fear आपके ज़हन में क्या होता है उस वक्त? वेल फेयर जो मुझे सबसे ज़्यादा जो होता है आई मीन मैं कभी भी ओपोनेंट से लाइक आई मीन मुझे इस चीज़ का फेयर नहीं हुआ। मुझे हारने का कभी डर नहीं रहा। यस ऑफ कोर्स बचपन में थोड़ा सा होता था, बट व्हेन आई टर्न अप टू बी अ प्रोफेशनल एथलीट और जब से मैंने प्रोफेशनल लेवल पे खेलना स्टार्ट किया, तो मुझे कभी ऐसा फेयर महसूस नहीं हुआ। हाँ, फेयर सिर्फ इस चीज़ का होता था कि सिर्फ अपना बेस्ट देने का, कि मैं हमेशा ये सोचता था कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट, क्योंकि मेरे जो मैक्सिकन कोच थे उन्होंने मेरे माइंड में एक ही बात डाली थी हमेशा से। क्योंकि जब भी मैं हार जीत का सोचता था तो ऑफ कोर्स काफ़ी प्रेशर होता था कि यार अब इसको जीतना है, हार ना जाऊं। लेकिन जब से मेरे माइंड में वो चीज़ आई है कि द ओनली थिंग आई कैन डू इज लाइक आई मीन आई हैव टू गिव माय बेस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज लाइक आई मीन वो अल्लाह पे छोड़नी चाहिए। रिजल्ट्स जो है मतलब आपको यू कैन नेवर थिंक अबाउट रिजल्ट्स। तो ये हुआ है कि मुझे कभी इस चीज़ का डर नहीं हुआ। अच्छा, सो वो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ आप खेलना चाहेंगे, जिनके अगेंस्ट आप खेलना चाहेंगे? प्रॉब्ली आपको मौका मिला है, नहीं मिला है, हु इज ही और शी, और व्हाई आर दे योर मोस्ट वर्दी ओपोनेंट्स? वेल हमेशा से एक ज़हन में रही है कि बात कि मतलब मैं टॉप 10 के प्लेयर्स के साथ जो है मतलब मैं कम्पीट करना चाहता हूँ वर्ल्ड में जितने भी टॉप 10 के एथलीट्स हैं। और आई हैव ऑलरेडी प्लेड अगेंस्ट वन ऑफ देम। वर्ल्ड नंबर 3 के साथ मैं खेला था
पाकिस्तान में जो है एक बड़ी सीरीज हुई थी पाकिस्तान वर्सेस इजिप्ट, तो उसमें वर्ल्ड नंबर 3 आए थे उमर मुसाद, उनके साथ मैं खेला था और आई मीन वो खुशी मुझे हुई थी कि मतलब मैं आई स्टेप ऑन द कोर्ट विद वर्ल्ड नंबर 3 और आई मीन हमेशा से यही यही ख्वाहिश रही है कि मतलब आई मीन कि मैं टॉप 20 में खेलूं और टॉप 20 के प्लेयर्स के साथ जो है मैं compete करूं। anyone, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो। ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड। मैं अपनी जो कोई बात आईपीएल नहीं, था, कोई बात नहीं, आमिर सिर्फ शबाना, आमिर शबाना, आई मीन आई लव हिम द मोस्ट, आई लव टू वॉच हिम, मैं उसके साथ खेलना चाहता था बट ही इज ऑलरेडी रिटायर्ड नाउ। maybe he will come out of retirement just to play with you some. We can keep our fingers आई crossed on that, huh? आई विश। Okay. अच्छा, so there are many young people जो कि एथलीट बनना चाहते हैं, चाहे वो स्क्वॉश हो या कोई मे बी कोई और स्पोर्ट भी हो सकती है. So what is your advice for them? कि वेल अगर स्पेशली अगर आप एक एडवाइस उनको दे सके कि ये काम करोगे तो ही सक्सेसफुल हो सकते हो वरना नहीं. देखिए मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइक स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट जो है वो कैसे आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए स्पोर्ट्स ने मेरी लाइफ में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। जो सबसे सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है मतलब स्पोर्ट्स ने मुझे एक डिसिप्लिन पर्सन बना दिया है जो कि मैं आज फ़ील करता हूँ आई डोंट थिंक सो अगर मैं स्क्वॉश ना खेलता तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं इतना डिसिप्लिन लाइफ में होता। और तो एक तो स्पोर्ट्स जो है आपको डिसिप्लिन सिखाती है और फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है और लाइक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं लाइक सी यू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यू सी द होल वर्ल्ड, यू मीट डिफरेंट पीपल और जो सबसे अच्छी बात होती है इवन तो अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं जो बच्चे जो यंगस्टर मुझे सुनना चाह रहे हैं मैं उनको ये बताऊंगा इवन तो अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो मैं क्यों चाहता हूँ कि आप किसी ऐसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करो लाइक आई मीन अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हो तो अभी माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ आई हैव कपल ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर रिक्रूटेड बाय डिफरेंट कॉलेजेस ओवर हियर इन द यूएस, हार्वर्ड, येल, ट्रिनिटी, रॉचेस्टर, तो सारे आपको रिक्रूट करते हैं। तो आप अगर आई मीन अगर आप इन कॉलेजेस से पढ़ते हो या यूएस में पढ़ते हो आई मीन इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो स्पोर्ट्स आपके लिए लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती हैं एंड अब बात यहाँ की आती है लाइक हाउ दे कैन जॉइन एनी स्पोर्ट्स। तो आई मीन इट्स क्वाइट सिंपल, यू डायरेक्टली हैव टू हैव एन एक्सेस। आप अगर स्क्वॉश खेलना चाहते हैं, आप अगर फुटबॉल खेलना चाहते हैं, व्हाटएवर स्पोर्ट्स, आपको पहले उस एसोसिएशन तक एक्सेस होनी चाहिए एंड देन वो एक मुहावरा है कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सो द मोर यू वर्क हार्ड द मोर you become I mean you become better। तो it's all about that और आप that's the thing और फिर आप improve करते हो लाइफ में। So other than squash, what are your activities in the US? मतलब ट्रेनिंग वगैरह के अलावा क्या क्या कर. वेल अदर देन स्क्वॉश मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं व्हाट आई मीन जैसे ही यू नो कि जब से क्वारंटीन स्टार्ट हुआ है और एवरीवन इज लॉकडाउन तो मैं अपने कोच के साथ बैठा था एंड आई वाज लाइक माय कोच वाज लाइक टेलिंग मी कि यार लाइफ जो है काफ़ी टफ हो गई है। आई मीन लाइक अचानक से लाइक आई मीन एवरीथिंग सीम्स टू बी लाइक वेरी यू नो आर्टिफिशियल लगने लगी है। यस और लोग जो है काफी सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं तो वी डिसाइडेड कि व्हाई नॉट इफ वी स्टार्ट एनी ऑनलाइन प्रोग्राम। अगर आई मीन हर कोई घरों पे बैठा है और आई मीन सोशल मीडिया का दौर है, व्हाई नॉट इफ वी स्टार्ट एनी ऑनलाइन फिटनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो me and three of my coaches, I'll mention their name. One is Coach Fahim, one is Coach Kama, and there's another one, Josh. तो हम चारों ने मिलके जो है हम चारों ने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट इफ वी इनवाइट पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड और हम जूम पे जो है मतलब ऑनलाइन फिटनेस सेशंस देंगे एंड व्हाटएवर वी गेट वी विल डोनेट दैट टू दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो दिस इज़ अ स्टेप वी हैव टेकन और माशाल्लाह से काफ़ी डोनेशन हो गई है। इट्स बिन द फोर्थ डे और आई मीन that's one of the thing I mean which makes me satisfied।
That's a noble cause, and this is obviously a personal opinion, but the thing is कि मुझे ऐसा लगता है कि when you have hard times, तो कोई ना कोई help करने के लिए जरूर आ जाता है. So I guess you're just one of Exactly. them. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा, so we talked about quarantine. So life has come to a stop, and I think हमारे से ज़्यादा शायद यूएस में काफी बुरे हालात हैं in terms of number of infected people and the mortality rate. So, and I'm sure कि under those circumstances तो life उधर बहुत ज़्यादा affect पर हमारी भी हुई है, लेकिन I'm sure कि उधर भी काफी है. So, how do you train under the circumstances? आपकी क्या routine होती है? कैसे active रहते नूर, यहाँ पे अगर देखा जाए, ऑफ कोर्स आई मीन अब अभी अगर ज़्यादातर देखा जाए, पूरी दुनिया में जो है, मतलब आई मीन एवरीवन इज क्वारंटीन। और मैं ज़्यादातर क्या कोशिश करता हूँ कि लाइक आई मीन जब मॉर्निंग मेरी स्टार्ट होती है, तो आई मीन आई ट्राई टू गो एंड रन लाइक फॉर 40 to 45 minutes इन द मॉर्निंग। लाइक कोई भी नहीं होता, तो आई मीन एज सोशल डिस्टेंस का बोला हुआ है, तो आई मीन देयर इज नो वन। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब लाइक मेरे घर के सामने ही ग्राउंड है, तो मैं उसी में चला जाता हूँ और मैं अपनी फिटनेस मॉर्निंग में वहाँ पे कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जो है घर आ जाता हूँ, लाइक आई मीन सारा दिन घर पर होता हूँ। एंड देन आई ट्राई टू रीड अ बुक। मेरे मेरे जो दूसरे फिजिकल ट्रेनर है, उनका नाम केविन है। आई मीन it's he's almost 70 and it's about his life, so I tried to read his book, और it's quite inspiring। और मैं उसकी बुक को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एंड देन आई डू माय सेकंड सेशन लाइक इन द बेसमेंट, क्योंकि स्क्वाश एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि आपको दीवार मिल जाए और आपके पास रैकेट हो, आप कहीं भी खेल सकते हो। तो आई ट्राई टू गो टू माई बेसमेंट, और वहीं पे जो है मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह जो है मैं वहीं पे कर लेता हूँ। So this is how I spend my life in over here in quarantine. हैं? अच्छा, what do you miss the most from like पहले? घर के खाने। Okay, that's a different one. That's a different one. अच्छा. So we come to stop with the serious wala part. Now we have some fun stuff. So now we have the rapid fire, and I kind of spiked my energy levels for it this morning with a banana. So Okay. I hope you had something new. Acha, so I'm going to ask you a few questions, and you Yes. have to answer as fast as you can. And I think Okay. एक दो शायद cover कर भी चुके हैं, लेकिन even then you have to answer as fast as you can. So here we Okay. go. So a rumor that you heard about yourself. Uh, बहुत शौक है। So okay, if you ever got stranded on an island, तो और उस island पे कोई बिजली, पानी, power की कोई situation नहीं है, तो वो कौन सी तीन चीजें जो अपने साथ लेके जाएं? सिर्फ खाने की चीजें। That's it. So what are the three things? मैं कोशिश करूंगा खाने की चीजें हो मेरे साथ, और मेरे साथ जो है मेरे फिटनेस स्टफ हो। That's all. Oh, okay, चलिए ठीक है. Favorite thing to have for dinner? Steak, Chicken or beef? beef. Okay. So if you had a superhero power, what would it be? I would be a Spider-Man. Yeah, okay. Spidey senses tingling. Yep. अच्छा. Uh, if you were in trouble और सिर्फ आप एक बंदे को मैसेज भेज सकते for help, who would that be? One of my friend, her name is Norina Shams. Oh, अच्छा, cool. ठीक है. Yeah. अच्छा. Worst injury that you ever had? Worst injury, that was my ACL injury, and it took me like 1.5 years to recover. Okay. Uh, what did you dream of being when you were a child? To be a doctor, and I turned up to be a professional athlete. So the best thing about being a sports person. The best thing about being a sports person, you're more disciplined. तो अगर आप किसी भी टीवी शो पे गेस्ट स्टार कर सकते तो वो कौन सा शो होता? Kapil Sharma show. सो अगर आप टाइम में वापस जा सकते और व्हेन यू वर 15 तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देते?
अगर मैं टाइम में वापस जा सकता हूँ when I was 15, मैं और भी मेहनत करता. So now we asked the audience that if they had any questions to ask you, so they should Okay, send them in. We have a few. okay. So सबसे पहले तो there is somebody called Reina 37, and they want to know at what age did you start playing? What age? When I was 9 years old. Okay. अच्छा फिर there is a question from WM2213 and they want to know that if they want to pursue a career in sports, then what are the things that they require? Dedication. That's the only thing I would say. अच्छा, and what about let's say facilities and coaching and क्या होता है आपके equipment वगैरह? Okay, well, I mean, if they really want to pursue like any kind of sports, so of course, like I mean, they have to have an access to that sports, or like अगर वो international level पे खेलना चाहते हैं, तो yes, they have to have a proper professional coach from the start, or I would say proper nutritionist, proper psychologist. So these are the people. क्योंकि it's not like an individual work. It's always a teamwork, no matter what sports you play. Okay. अच्छा, so that was it for the audience's questions as well. Is there anything that you would like to add? Thank you so much. और मैं सिर्फ like I mean I really wanted to add about that hepatitis campaign when I started that. तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. जी जी, just go ahead. Okay. So, I mean, in 2017, I decided to start a campaign, end of 2017, and that was a hepatitis campaign when I became an ambassador for Pakistan Liver and Kidney Institute. क्योंकि I have seen my mom जब मेरी मामा की वफ़ात हुई तो आई मीन दैट वाज़ द टाइम लाइक आई मीन कि मैं लाइक काफ़ी टाइम तक जो है आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड और मैं चाहता था कि लाइक क्योंकि मैं किसी और को उस हालत में देख नहीं सकता था क्योंकि माय मॉम हैड लिवर कैंसर और देन आई स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर हेपेटाइटिस जब मैंने देखा कि बाकी लोग जो हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं तो आई मीन मेरे करियर के साथ थोड़ा-सा मेरे लिए वो चीज़ जो है थोड़ी-सी मुश्किल थी, बट स्टिल आई ट्राई टू डू एज़ मच एज़ आई कैन और I really want to focus on that. I mean, once I'm done with my professional career, तो वो चीज़ जो है मैं इंशाल्लाह in the future, of course, I'm gonna do something for that. As a question related to this, so if somebody were to hear this and मतलब wish to know more कि हम help करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं या फिर if they're unwell and they're patients or where can we seek help तो फिर वो क्या कर सकते हैं? Well, what I can do is, I mean, I can. I'm still trying to building up my team. I have a couple of my friends, like I mean, they're working with me, but it's not like I haven't started any like in an official way. लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि I mean, मैं किसी तरीके से इस चीज़ को जो है साइड पे लाइक आई मीन अपनी टीम को जो है बोलूँ कि वो इस चीज़ को जो है साइड पे चलाए एंड आई मीन the first thing I mean I'm gonna welcome anybody अगर कोई जो है मेरे साथ जो इस cause में शामिल होना चाहता है तो he's welcome and I mean anything he wants to donate for this so I mean he's welcome or I mean what I mean I'm going to start my foundation Ahsan Ayaz Sports Foundation which is going to work for the underprivileged sports as well as for these purposes so I mean I'm willing to welcome anyone अगर कोई join करना चाहता है. Thank you, Ahsan, for joining us today. And I learned some things about you and about squash that I probably wouldn't have learned
pehle, and I hope that the audience also gets to learn from this experience that I had. So thank you very much, Hassan. Thank you for your time. Thank you so much, Noor. Thank you so much. I appreciate that. Thank you.